हेलो दोस्तों, आप सभी का द फिलॉसफी टीवी में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम फिलोसफिकल स्कूल के बारे में जो इंडियन बॉर्न है। उसका नाम है कारवाका स्कूल ऑफ फिलॉसफी। कारवाका स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है एक नॉन वैदिक मटीरियलिस्टिक स्कूल है जो जिसका नाम इसके एक सेज कारवाका जिसका नाम था उस पर पड़ा है। जो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है एक ही किस्म की रियलिटी एक्सेप्ट करता है। जैसे रियलिटी जो है कोई फिलॉसफी या कोई मेटाफिजिक्स या कोई और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट वो एक्सेप्ट करते हैं रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग द रियलिटी ऑफ द अदर वर्ल्ड, यानी कि देयर इज़ अ वर्ल्ड आफ्टर डेथ, राइट। जिसमें कहा जाता है कि a person will be judged on his deeds, but when he dies, and based on his deeds, he will find a place either in hell or in heaven. So there is a parallel world theory in other schools of thought, but ये school of thought जो है वो accept करता है कि there is the reality of only this world, right? तो there is no other world. The reality is the reality of this world. तो जो लिटरेरी सोर्सेस है, यानी कि हमें कारवा स्कूल ऑफ थॉट के बारे में किन सोर्सेस से पता चल जाता है, तो पूर्व पक्षास यानी रेफुटेशंस, एक्चुअली रेफुटेशंस ऑफ वेदास, जो भी रेफुटेशंस ऑफ वेदास है, somehow one way or the other they are the कारवा सोर्सेज ऑफ नॉलेज, यानी जिनसे हमें कारवाक का पता चल जाता है, स्कूल का पता चल जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नाम सरफिरस आता है दैट इज माधवाचार्याज सर्व दर्शना समग्रह, ये किताब का नाम है जो माधवाचार्य का है। इसमें जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट कारवाक स्कूल ऑफ थॉट एंड कारवाक वे ऑफ लाइफ। अब हम चार चीज़ों पे फोकस करेंगे कि चार चीज़ों में जो है कारवाक स्कूल ऑफ थॉट का क्या कहना है। एक तो उनकी एपिस्टेमोलॉजी पे, एक मेटाफिजिक्स पे, एक एथिक्स पे, और जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स है जैसे द कंसेप्ट ऑफ गॉड, द कंसेप्ट ऑफ सोल, कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, इनके बारे में हम पता करेंगे कि कारवास की क्या राय है। तो जो एपिस्टेमोलॉजी है जो है वो फोकस करती है नॉलेज पे, यानी कि इट इज़ समहाउ defined as the theory of knowledge. So there are various knowledges available to us. There is all sorts of knowledge that come to us from all sorts of sources. Now which knowledge is correct knowledge comes under the subject matter of epistemology. तो इनकी epistemology क्या है? तो चूंकि हम जानते हैं कि epistemology जो है वो एक्सेप्ट करती है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज। एक सोर्स ऑफ नॉलेज उसमें परसेप्शन होता है। परसेप्शन वो सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया जो इंसान परसीव करता है थ्रू सेंसेस, वाइल एज अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज इंक्लूड इन्फ्रेंस, लॉजिक से हमें हासिल होती है, या जो मैथमेटिकल नॉलेज है या जो रीजनिंग से हमें हासिल होती है, दैट इज़ द नॉलेज फ्रॉम इन्फ्रेंस, ठीक है। लाइकवाइज देयर इज़ नॉलेज दैट इज़ कॉल्ड टेस्टमनी, जो हमें किताबों से मिलती है या कोई इंसान हमें इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज़ ऑल्सो द नॉलेज which is called testimony. या intuition is also a kind of a knowledge which has source in the inner callings, okay. बट जो कारवाक्स है वो एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ परसेप्शन को। ये समझते हैं कि जो भी नॉलेज इंसान को मिलती है आउट ऑफ हिज ओन सेंसेस दैट इज़ अलोन वैलिड। और कोई भी नॉलेज, जैसे मुझे कोई इंसान कोई बात कहता है, सो दी उसकी ऑथेंटिसिटी जो है कमज़ोर होती है। और ये जो कारवाक्स है ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कोई और सोर्स ऑफ नॉलेज, या रीजनिंग से या लॉजिक से या इंट्यूशन से या टेस्टमनी से, ये कोई भी और सोर्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज वैलिड अपार्ट फ्रॉम दी नॉलेज कमिंग फ्रॉम परसेप्शन। ये समझते हैं कि परसेप्शन दो किस्म का होता है, एक जो सेंसेस से हमें हासिल होता है जो एक्सटर्नल होता है, और जब ये इंफॉर्मेशन या सेंसेस से मिलने वाली इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है और दिमाग इसको प्रोसेस करके फिर या तो डाइसेक्ट करता है या जोड़ देता है, तो वो इंटरनल नॉलेज हो गई, इंटरनल परसेप्शन हो गया। परसेप्शन का जो ये एक्सेप्ट करते हैं
प्रोसेस वो ये कि जब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या सब कोई भी ऑब्जेक्ट इंसान के सेंसेस से कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे वो नॉलेज जो जनरेट होती है। तो ये तो होगी इनकी एपिस्टेमोलॉजी। इनकी एपिस्टेमोलॉजी जो है, जो इन्फ्रेंस पे पर्टिकुलरली इनका जो है अटैक रहता है। वो समझते हैं क्योंकि इन्फ्रेंस इस तरह से हासिल होती है, सपोज हम कहेंगे एक यूनिवर्सल रिलेशन इम्पोर्टेंट होती है इन्फ्रेंस के लिए। जैसे हम समझते हैं, हम कहेंगे एवरी मैन इज़ वाइज, तो ये एक जनरलाइजेशन होगी, ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया, ये हर एक इन्फ्रेंस के लिए ज़रूरी है। फिर हम कहेंगे मिस्टर एक्स इज़ अ मैन। पहले तो हमने कहा एवरी मैन इज़ वाइज एंड मिस्टर एक्स इज़ अ मैन। तो हमें जो नॉलेज वहाँ से डिराइव होती है वो ये होती है कि मिस्टर एक्स इज़ वाइज, विदाउट नोइंग कि मिस्टर एक्स, वेदर मिस्टर एक्स इज़ वाइज और नॉट, we have this universal information, universal relation, which is every man is wise, and we have another statement, Mr. X is a man. Then the knowledge that we derive from these two statements is comes comes to give us this information that Mr. X is wise. Okay, so but they disbelieve or they doubt every form of universal relation. They are skeptical about universal relations. That is why they reject inference as a source of valid knowledge. तो ये तो होगी इनकी एपिस्टेमोलॉजी। अब इनका मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स जो है, मेटाफिजिक्स somehow discusses a question about reality. What is reality? What is the nature of reality? And what is existence? Okay, so when it comes to discussing questions such as real or fake, right? So the metaphysics of Carvaks derives from their epistemology. What do I mean by that? वो ये कि जो इनकी मेटाफिजिक्स है, यानी कि जब ये रियलिटी पे पहुंचते हैं कि रियलिटी असल में क्या है, तो इनकी जो मेटाफिजिक्स है वो कहाँ से डिराइव होती है? इनकी एपिस्टेमोलॉजी। क्योंकि ये नॉलेज को ही जो है समझते हैं कि नॉलेज सिर्फ हमें परसेप्शन से मिलने वाली नॉलेज जो है वही जो है एक्यूरेट है। तो उस हिसाब से जब इन दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो इनका मेटाफिजिक्स एक्सेप्ट करता है द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली, जो हमें नज़रों से दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है। जैसे चीज़ें होगी, मटीरियल चीज़ें जो हमें दिखाई देती है, हमें तो न सोल दिखाई देता है, न हेवन एंड हेल दिखाई देता है। तो उन चीज़ों को ये बिल्कुल ही डिसरिगार्ड करते हैं, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो देयर मेटाफिजिक्स इज ऑफ अनक्वालिफाइड मटीरियलिज्म, यानी वो सिर्फ मटीरियल चीज़ों में बिलीव करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटीज सच एज virtue, when we talk about liberation, particularly in Indian philosophy, we talk about liberation. Liberation or moksha is the core concept of Indian philosophy, or most of the Indian philosophies center themselves around this very theme, that the purpose of this life is to liberate one's soul from the cycle of birth, okay, cycle of rebirth. But Carvaka school of thought is somehow stands out from other schools of Indian philosophy and rejects anything which cannot be witnessed or which cannot be seen from sense experience or which cannot be perceived. तो इनका जो मेटाफिजिक्स है वो टोटली मटीरियलिस्टिक है, यानी वो सिर्फ उन चीज़ों को मानते हैं एज एग्जिस्टेंट एंड रियल जो उनको सेंसेस से दिखाई पड़ती है। वो समझते हैं कि मैटर जो है, उस टाइम का जो कंसेप्ट था जब कारवाक स्कूल ऑफ थॉट ओरिजिनेट हुआ, उसमें मैटर में एक और मैटर की फॉर्म एक्सेप्ट की जाती थी जिसको ईथर बोला जाता था। लेकिन वो ईथर आंखों से दिखाई नहीं देता था, दिखाई नहीं पड़ता है। तो जिसको हम बोलते हैं जो स्पेस में खला है बिटवीन स्टार, जब हमें स्टार्स दिखाई देते हैं वो तो हमें एविडेंटली दिखाई देते हैं, वो तो हमें
रात में दिखाई देते हैं as objects which are shining in the sky, and the space between these shining objects was considered to be a form of matter, transparent though, and it was called ether. बट जो कारवाक्स है उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया. उन्होंने बोला कि चूंकि it cannot be perceived from sense experience, so it does not exist. तो ये तो एक खास बात हो गई. Now जो क्वेश्चन रहा कि what is consciousness. Now somehow there came about on their path a slippery slope where they couldn't stand their feet, which was the consciousness, the question of consciousness. लेकिन इन्होंने consciousness को reject नहीं किया outrightly. They said they accept consciousness, they do not deny consciousness as something which does not exist. But they said that unlike others, consciousness is the part of the body, and when the body decays and disintegrates, the consciousness also decays and disintegrates. So unlike others who thought that consciousness is the attribute of the soul which transcends this world and migrates, right, which was also the belief of Pythagoras, transmigration of soul. So they completely rejected that. They said, like Buddhist school of thought, they agreed with the Buddhist school of thought on the matter of consciousness, saying that consciousness is an attribute of this very body. And when they were asked, how can dead elements produce a live consciousness, they said that they quoted this example of areca nut and other components coming together in the betel nut and producing a color which did not exist in either of the ingredients. जैसे हम पान खाते हैं और पान में डिफरेंट चीज़ें मिक्स हो जाती है और किसी भी चीज़ का कलर जो है रेड नहीं होता है. जब पान चबाया जाता है तो उस कॉम्बिनेशन से फिर लास्ट में जो है निकल के आता है red color. They said when all of these ingredients which are otherwise dead, which do not have a consciousness of their own, when they come together in a proportion, right, they produce consciousness. And about mind, they say ki body produces mind as liver produces bile. Okay, so these were the statements in arguing about consciousness, that consciousness is not something which has a spiritual connection or a connection to any spiritual entity such as soul, which cannot be seen. Rather, it is an aspect of the body. When the body disintegrates, the consciousness also goes away. Now, some of the concepts which were traditional and which are even traditional right now, their metaphysics somehow derives from their epistemology, which is that whatever cannot be seen cannot be accepted as existent. So since God cannot be seen, so it does not exist. They were outrightly against the concept of God. They said that God was a creation of the creation of some men who exploited common masses, indicating or pointing towards the Brahmins of that time who exploited Vedas. They said Vedas was nothing but the invention of some cynical or cunning Brahmins who invented the text to, either scare, common people, common masses, in order to gain popularity and wealth from them, right? So this life is the only life that one gets. There is no second chance. When we die, we return to the earth. Our consciousness is taken away and our consciousness disintegrates and decays. So this is the only chance. So about hell and heaven, they disagree. They say that these entities are the imagination of some of these cynical Brahmins. If you want to go to heaven, then make this life a heaven. Okay, so उनका यही मानना है कि इसी दुनिया में जो है जन्नत बनाया जा सकता है by seeking pleasure. वो कहते हैं कि जन्नत की फीलिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे इंसान को जब प्लेजर मिलता है वैसी, और जब इंसान को उसके दुश्मन उसको तंग करते हैं, इसी दुनिया में वो नरक जो है की एक्सपीरियंस से गुजरता है. तो नरक और जो हेवन है
वो इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. देयर इज नो एविडेंस दैट देयर इज हेवन एंड हेल that people can go to after death. So this is your chance, even if there is hell and heaven, but one doubts that, then there are certain quotations which are relevant here. जैसे वो कहते हैं कि a pigeon today is better than a peacock tomorrow. इवन कि अगर हेवन होगा भी, लेकिन हम इस दुनिया में इतना प्लेजर सीख करेंगे, वो ही प्लेजर हमें सुफाइस करेगा. हमें एक कल के पीकॉक की एक्सपेक्टेशन की वजह से इस आज के दिन को, आज के इस कबूतर को हाथ से जाने नहीं देंगे. बिकॉज कल किसने देखा है? देयर इज डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल. सो व्हाट वी डू रादर इज व्हाट इज सर्टन. This life is certain. As we pass through time, this time is certain. Today is certain. Tomorrow is doubtful. So why should we lose the certain today for a doubtful tomorrow? That is why they put forth this quotation ki a pigeon today is better than a peacock tomorrow. ये उनका ethics है. So their ethics is somehow hedonistic in nature. They advocate that one should try to reduce pain in life and increase pleasure. So this is the ethics, or this is their way which they promote, that how a person should live. And also they do not care about collective, they do not care about society, they think about the individual, right? They see that each person should live for himself rather than, जैसे हम सोसाइटी में चैरिटी करते हैं, जैसे हम सोसाइटी में दूसरों का सोचते हैं, जैसे हम सोसाइटी में बोलते हैं कि we should live collectively, we should live in social harmony, we should live, and all of these collective things do not come across the Cārvāka imagination. They always believe in individual good. When the individual is happy and prosperous, the society at large also will be prosperous. So their ethics is somehow individual and does not go beyond the individual, and they always advocate upon the individual to seek pleasure as much as he can. And here is a story about a conversation taking place between a priest and this Cārvāka. One day a Cārvāka comes across a priest who is sacrificing a goat, and when the Cārvāka asks why is he sacrificing the goat, the priest replies that the soul of the goat will go directly to the heaven. So the Cārvāka replies that if that is true, you can jolly well put yourself in that inevitable position, because that is what you are wanting, that is what you are seeking. So you should have rather sacrificed yourself and gone to the heaven in the first place. So all of these traditional beliefs of hell and heaven and God are rejected outrightly, because they do not come in the purview of one's perception, hence they are rejected. So this was all about the Cārvāka school of philosophy, and we try to highlight a bit on their materialism. We try to highlight how they reject certain metaphysical concepts such as hell, heaven, and transmigration of soul, and also very importantly, they do not accept karma, because they do not accept life after death. They do not accept moksha, liberation, because for them liberation is to liberate oneself from the pain, right, rather than liberating oneself from rebirth, because there is no rebirth. So all of these traditional concepts which were Brahminical and Vedic in nature were outrightly rejected, because some historians say that Cārvāka school of philosophy was invented as a reaction towards the Brahminical hegemony of that time. So it was a reaction towards
the misuse of Vedas by certain priests of that time, and somehow it gained popularity among various groups who found an inspiration in this in this school to actually have the philosophy grounding to resist that Brahmanical exploitation. Hope you enjoyed the video. Please subscribe our channel and press the bell icon as well, so that we can get to you as much as possible and bring videos like these to you, so that you can also gain insights about various schools of philosophy in the world. Thank you.